Chaucer in English literature? This is a question which you will be asked in the exams most of the times because Chaucer has a great place in the history of English language as well as literature. And he was a pioneer. Pioneer means the beginner in many respects. He is many aspects, sorry. He's the first realist. Realist means he talks about the real issues, the issues which are affecting common people in the society, the degradation or moral corruption in the society, in the church, and it talks about the growing middle class. When we read his poem, that prologue to Canterbury Tales, you will come to know that how beautifully, how realistically he paints the life of the contemporary society, of the society of those days. So he was the first realist. Till now, we were talking about great heroes, legendary stories. The theme was largely religious. We were talking about great saints and the great martyrs. Common human beings were not at all the center of discussion or literature. So he was the first person to, bring this realism into the English literature. And he also is called the great humorist, first humorist. Once you go through that Canterbury, the tales, you will find a lot of humorous characters who have been drawn from different stratas of the society when we go through that poem. And he is also called the first narrative artist, the art of narration, storytelling, which is there in him. And he is the first great character painter. And he is also one of the earliest one to have great kind of new forms of poetry which he introduced. So these are all things which are connected to him. First great realist, first humorist, first narrative artist, and first character painter. So he's always first, and he's the first man to set English as a language. So he has been, credited with the fatherhood of English. He is called as a father of English language and literature. And he was not only the first poet, but a great poet, a genius. He has been called the fountain source of vast streams of English literature. So why is called so? Because I told you before him there was no trace of English as a common language of England. England was divided in different dialects which were spoken across different parts of England. So he was the first one who not only set a standard English but also popularized it. So this is so he holds the highest place in English literature. And first, we'll talk about contribution to language because literature needs some media. What is that media? That media is language. When there is a language, then only there will be literature. So, man connected to language, language is ultimately through which we produce literature. So, language is the link between man and literature, and language plays the most vital role in the growth of literature. So Emil Loyal, who is a critic, he has quoted, and I quote, Chaucer found his English a dialect and left it a language, unquote. Okay, so all critics whosoever is written about Geoffrey Chaucer, they call him as the father of English language because prior to him there was no English as established language. There were different dialects, and he, set it on the right track by not only fixing it as a standard language but also popularizing it. Now, similarly, there are other critics who say that, uh, Sainsbury is another critic who says that the transformation which Dryden brought in English poetry, we may justly say that Chaucer found the English language brick and left it marble. So these are the comments, these are the critical comments which are made by the critics in the posterity. बाद में whosoever came later and whosoever studied Geoffrey Chaucer, so they have given such wonderful remarks about him. You can understand the simple language. English language, he found English brick. मतलब उसको जो English थी वो एक
मतलब रॉ एक मटेरियल की तरह मिली थी, ब्रिक मतलब ईंट की, एंड लेफ्ट इट मार्बल एंड ही पॉलिश्ड इट एंड ही मेड इट मार्बल। उसने उसको मतलब शीशे की तरह चमकाया, मार्बल की तरह, right? Then, when Chaucer started his literary career, the English speech and little less the English of writing was confusing and unsettled. That is why I told you, if you go through those old English poems, you won't be able to get any idea of what it is about, because there are a lot of vowels which are repeated, which are unnecessarily there. There are consonants, so you won't be able to make any sense out of it. So it was very confusing and unsettled, and English was divided into dialects, which I have been telling you since the beginning. So these dialects, which were spoken in different parts of the country, the southern, the midland, then the Northumbrian, and the Kentish. So these were the dialects which were spoken. In Midland also there were two dialects: East Midland and South Midland. Okay, so now out of these four, the Midland, there were two Midland dialects, East and West Midland. So he not only said the East Midland dialect, which was spoken in London, so it had simplest grammar and syntax. So the simplest dialect in terms of its grammar and writing style was East Midland. So Chaucer employed East Midland dialect, and because of the weight of his genius, it was decided then for everyone that from that day onwards it became the standard literary language of England. Okay, in all times to come. That means the modern English which we know today or we study today was this English, East Midland dialect, which was, fixed by Geoffrey Chaucer, and because of the sheer, or because of the great genius with which he treated it, it became the standard language of England, which you know today as English. So I think this is clear, and none after him, could even think of changing this dialect to any other form. So you can understand, this is the greatest contribution which Geoffrey Chaucer has made, and it is also true. Had it not been East Midland, had he chosen some other dialect, then again that would have been fixed as standard English. All the great writers of England after Chaucer, they uh, you know in the words of John Spears, another critic, yeah, I quote him, and this is masters of the language of which Chaucer is before them the great master. So this is how different critics, they understand the great contribution which Geoffrey Chaucer made. In simple words, you can say that before Chaucer there was no standard English, right? There were different dialects which were spoken in different parts of England, and he chose East Midland dialect, and he used it in his poetry and his works, and that is how it became the standard language of England. So this is the greatest. This was the first thing. First thing, I think all of you got it. पहला point यही था कि there were different dialects. बहुत सारी बोलियां थी जो इंग्लैंड में बोली जाती थी. East, West, North, South, Northumbrian, Midland, then your Kentish, and these East Midland and West Midland. Geoffrey Chaucer, he chose East Midland and used it in his poetry, and it not only set it as a standard language but also popularized it with the sheer weight of his genius. And after that, it was followed by everyone. That means it became the standard English. Okay. Then there was another thing which I covered in the previous lectures also, that there were two different languages operating there. The language of the rulers or the courtiers was French, because they were French originally, and the language of the church was Latin. So these are the two big influences is one in one's social life. दो ही चीजें होती हैं, एक आपका रूलर कौन है, दूसरा आपका रिलीजन, राइट? सो दोनों में क्या था, देयर वाज नो इंग्लिश, एक फ्रेंच था, दूसरा लैटिन.
So, so Chaucer, he chose English over French and Latin, right? Now, these two languages were well established languages. Yeah, uh, it was easy for Geoffrey Chaucer to use any one of them. He knew both. उनको दोनों आती थी, ऐसा नहीं कि उनको फ्रेंच और इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए, सॉरी, फ्रेंच और लैटिन नहीं आती थी इसलिए इंग्लिश में. ही वॉज अ मास्टर. ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन एंड फ्रेंच. ही वॉज अ मास्टर. और ऐसा भी नहीं है कि ही हैज नॉट रिटन इन लैटिन एंड फ्रेंच. देयर आर डिफरेंट पीरियड्स इन हिज राइटिंग, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था. ही रोट इन फ्रेंच एज वेल एज लैटिन. ओके. So Latin and French, one of the most popular languages in the world. They were more fashionable, and English, you know that it was a poor dialect at that time. So easily he could have chosen either Latin or French. तो उनकी choice थी कि वो Latin और French में भी लिख सकते थे. But he, preferred to use that very dialect, East-Midland, because Latin जो थी it was a kind of universal language. Roman Empire, it ruled all over the world. And जो church था, uh, it conducted its affairs in that language. French जो थी वो court की language थी, rulers की थी, right? तो 1365 तक royal household they used to make use of it. Then उसके साथ साथ जो जेफरी चौसर के contemporaries थे, जो उनके साथ के poets थे, जैसे जॉन गवर, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फ्रेंच में लिखी है. ओके. वॉक्स क्लेमेंटिस, they have written in all these three languages. John Gower also. But Chaucer had few doubts about the issue. He chose English, which was a despised, that means hated kind of language. And वो इस तरह से उन्होंने किया. As the legendary king did to the beggar maid, raised her from the dust, draped her in royal robe, and conducted her coronation. That queen is ruling even now. तो जियोफ्री चौसर ने उन, मतलब वो जो दो राजकुमारियां थी सुंदर और एकदम देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, फ्रेंच एंड लैटिन, उनको छोड़ के इस भिखारन को चुना. कौन सी भिखारन? जो जो एक तरह से भिखारन के रूप में थी, उसको नीचे से उठाया, धूल से उठाकर उसको उसको शाही पोशाक पहनाकर और उसको ताजपोशी कर दी उसकी. एक तरह से एक गली में पड़ी हुई भिखारन को उठा के उसको उन्होंने शाही लिबास पहनाकर उसको एक उसका ताज पहनाया. एक तरह से उसको रानी बना दिया. और वो रानी कौन है? हु इज दैट क्वीन? दैट क्वीन इज इंग्लिश, राइट? तो ये हालत थी इंग्लिश की, जहाँ पे ये दोनों लैंग्वेजेस, फ्रेंच और लैटिन, एक तरह से दे वर फैशनेबल, दे वर पॉपुलर, एंड दे वर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड. और एक तरफ इंग्लिश थी विच वाज जस्ट लाइक ए बैगर मेट, वो एक भिखारन की तरह, जिसको गलियों से उठा के जोफ्री चौसर ने उसे शाही पोशाक पहनाकर उसे उसको ताज पहनाया. और that is the English that you know today. Today you know that English is the lingua franca of the world. Almost everywhere you will find English. So एक तरह से it has become a world language. So you can understand, in as old as 14th or 15th century, there was no trace of English. English का कोई नामो निशान नहीं था. 1500, 1400, 15th century, 1340 to 1400, ये जो period था 14th century. So this is what he did to English, right? Then uh, one more point which we'll cover today is versification. So Chaucer has been called as the father of modern English versification. Verses, I told you there are verses, two types of things in literature. One is prose, another is verse.
In the previous class also I gave you an idea. Prose is simple sentences which we use in day-to-day life. Like, uh, I looked at the sky, there were beautiful stars in it. Okay. Now that is prose. Prose is the language of daily speech or common day speech. Prose, you read stories, you read novels, they are written in prose. Then verse is actually poetry, where the same words are there, but there are different elements, figurative elements, they come into play. वहां पे वो सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स शेयर किए। उसमें वर्सिफिकेशन, उसमें राइम हो जाती है, रिदम होता है, मीटर होता है, सो और फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलिटरेशन, personification, all these things, and poetic language is suggestive. Okay, वो सिर्फ एक इशारा करती है, uh, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था. So you must understand what is verse and prose. Okay. Then he is known as the father of modern English versification because he employed 3 meters. अबे मीटर क्या होता है? ये वो मीटर किलोमीटर वाला मीटर नहीं है. ये पोइट्री में एक तरह का, वो समझ लो वही तरह का मीटर होता है. इसमें भी नाप नपाई होती है, लेकिन यहाँ ग्राउंड की और रोड की नपाई नहीं होती. यहाँ लाइन की नपाई होती है. द लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेंजा, उसके अंदर कितना मीटर्स है. और मीटर्स क्या है? वो स्केल लेके नापने का नहीं. देर इज दिस इज अ टर्म विच इज यूज टू टेल हाउ मेनी फीट. जैसे मीटर्स है तो मीटर में कितना फीट. फीट मतलब वो मेरा हाइट जो है 5 फीट 6 इंच, ऐसा नहीं. वो फीट नहीं. फीट, व्हाट इज फीट? दैट इज अनदर टॉपिक विच आई विल टेक अप अनदर डे. राइट. सो इतना समझ लो कि पोइटिक लाइन जो है वो बिल्कुल मापी हुई होती है, नापी हुई होती है. ओके. उसका नाप नपाई होता है, उसमें फीट के हिसाब से मीटर बनता है. फीट कैसे बनता है? फीट बनता है सिलेबल से. व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड विच वी प्रोड्यूस इन वन ब्रेथ. ओके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से समझ आएगा प्रिंसिपल, तो इसके अंदर कितनी मात्रा है? हिंदी में समझने का है तो सीधा समझो कितनी मात्रा है. प्रिन, दिस इज वन. सी, टू, पल, थ्री. सो देर आर 3 syllables इन दिस वर्ड. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल. उसी तरह फादर, फादर, कितनी मात्रा लगी है? देखो बीच में फा और द. फादर, देर आर 2 syllables है. तो ये सारी चीजें एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दे आर इन योर सेकेंड ईयर, आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर. They should have been in the first, so that you get a concrete idea what meter is, what syllable is. तो ये जो syllables हैं इनसे मीटर बनता है, फीट बनता है. फीट क्या होता है? वो फीट अलग अलग तरह के होते हैं. अभी फिलहाल इतना समझो, ये बहुत, आई टेक, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, I'll be taking this as a separate lecture. बस इतना समझ लो कि हर पोइटिक लाइन जो है उसकी कोई लेंथ होती है, और उस लेंथ में कुछ हिसाब किताब होता है. ये एक तरह का स्ट्रेस पैटर्न होता है, उसमें स्ट्रेस पैटर्न, जिसमें कोई वर्ड स्ट्रेस्ड होता है, कोई अनस्ट्रेस्ड होता है. सिंपल बोले तो, you listen to Hindi songs or music. So that language is not plain. Uh, for example, you take the case of Mera Desh, Mera Mulk, Mera Ye Watan. Okay. So in simple, plain, uh, speech, it doesn't make any rhythmic effect. But once you apply proper stress pattern, then it becomes music, right? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन. So there are certain syllables you are stressing and there are certain you are not stressing. ठीक है. डे टू डे लाइफ में भी होता ही है. जैसे आप बोलते हो यहाँ आ जाओ. ओके. तो आप किस चीज को स्ट्रेस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है. यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ. तो यहाँ का मतलब है यहाँ आना, यहाँ मतलब हेयर. तो हेयर इज इम्पोर्टेंट. ओके. ठीक है. तो सिमिलरली, जैसे आपको अचानक से कुछ कॉकरोच दिख गया, ओके, तो आप किस तरह से कई चीज़ों को स्ट्रेस करते हैं बीच में.
अमी कॉकरोच कॉकरोच, राइट? सो दिस इज हाउ यू अप्लाई डिफरेंट स्ट्रेस पैटर्न्स, तो पोइट्री में बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रेस पैटर्न्स होते हैं, उससे फीट बनता है, फीट जो फीट भी अलग तरह के होते हैं, कुछ पैटर्न फॉलो करते हो, जैसे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, एक के बाद दो अनस्ट्रेस्ड या दो के बाद एक अनस्ट्रेस्ड. सो दिस इज अनदर टॉपिक which I'll be taking up. For the time being, just remember, poetic language has got a fixed kind of pattern, और उसी को हम मीटर कहते हैं. मीटर बनता है पर्टिकुलर फुट से या फीट से, और जो फीट बनते हैं वो बनते हैं आपके स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से. सिलेबल क्या होता है? आई टोल्ड यू, गिव इन अ ब्रीफ आइडिया. सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है तो, हाउ मेनी जो हिंदी में मात्रा होती है वो, ठीक है, कितनी में ब्रेक करते हैं आप एक वर्ड को. आई गिव यू द एग्जांपल्स. जैसे फादर, फादर में दो है, प्रिंसिपल, प्री, ओके, सी, पल, थ्री. इसी तरह एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, चार. Okay, so this I'll be covering. You can go through some material online. Just search what is meter or different types of meter in poetry. So कल आप पढ़ के आएंगे meters के बारे में in poetry, so that you have some idea. Then I can build on that. Then uh, तो इन्होंने he has given lot of meters. जैसे कई लाइन जो है, कपलेट्स होते हैं. कपलेट्स, कपलेट मतलब कपल ऑफ लाइंस. कपल मतलब दो, जो जिनके साथ एंड राइमिंग होता है. एंड राइम, व्हाट इज राइम? आई थिंक यू नो व्हाट इज राइम. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. स्टार एंड आर, तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो एक ही तरह का साउंड जिसमें आता है, दैट इज कॉल्ड राइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंपल टू लाइन्स है, कपलेट है. दो लाइन हुई तो कपलेट हो गया, तीन लाइन हुई टर्सेट हो गया, चार लाइन हुई वो आपका क्वार्टेट हो गया. सो इस तरह से डिविजन्स हैं. एज आई टोल्ड यू, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, यू शुड हैव some idea about these things. तो ये कपलेट है. His eyes twinkled in his heat aright, as soon the stars in the frosty night. So aright and night, ये राइम कर रहा है, ठीक है. और इसी में फिर ये मीटर, इसमें ये 10 मीटर्स की लाइन है. अब 10 मीटर कैसे है? आप इनके वर्ड्स को गिनोगे तो दो, चार, छः, सात है. सो आप बोलोगे ये कैसे है? आपने वर्ड्स को नहीं गिनना है, आपने सिलेबल्स को गिनना है. सिलेबल्स को कैसे गिनना है? हिज एक हो गया, एक ही मात्रा है. आईज दो हो गया. ट्विंकल्ड दो हो गया. इन हिज दो हो गया. हीट एक हो गया. और अराइट दो हो गया. सो इस तरह से गिनना है आपने, ठीक है. सो यू जस्ट ट्राई इट. 10 हो गए, ठीक है. सो दूसरी दूसरी में भी 10 ही मिलेगा आपको. एज डून द स्टार्स इन द फ्रॉस्टी नाइट. एज डून दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10. ओके, सो इसको बोलते हैं एम्बिक पेंटामीटर. ये बाद में बताऊंगा. एवरीथिंग विल गेट कंफ्यूज्ड इन योर माइंड. जस्ट रिमेंबर, एवरी पोएटिक लाइन हैज गॉट सम लेंथ, एंड दैट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. नॉट द मीटर वो किलोमीटर मीटर वाला नहीं. मीटर जो फीट से बनता है, फीट जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है. और वो जो फीट है वो डिफरेंट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट. ओके, सो सिमिलरली एक तरह से उन्होंने हेरोइक कपलेट को यूज किया, जिसमें एक लास्ट राइम वर्ड है, और साथ में ही यूजेस अ 7 लाइन स्टेंजा. 7 लाइन स्टेंजा इन ऑफ डेकासिलेबिक लाइन्स and 5 accents, each having the rhyme scheme A B A B B C C. ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ राइम रॉयल और 7 लाइन स्टेंजा इंट्रोड्यूस्ड बाय जोफ्री चौसर? A B A B B C C. ओके, तो ये फ्रेंच से उन्होंने बोरो किया था. इसको राइम रॉयल भी कहते हैं, राइम रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा. So this may be asked in the exams. What is rhyme royal, or what is the rhyme scheme of Chaucerian stanza? तो ये जो सारी चीजें हैं आपको एक एक समझ में आनी चाहिए. 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन का स्टेंजा है, मतलब 7 लाइनें हैं उस स्टेंजा में, ठीक है. जैसे पैराग्राफ होता है वैसे स्टेंजा होता है पोइट्री में.
ओके, एक आइडिया के लिए एक पैराग्राफ, सिमिलरली वन थॉट, वन इमोशन, वन स्टेंजा। सो यू हैव 7 लाइन्स देयर। और हर लाइन जो है कितने फीट लंबी है? वो 5 फीट लंबी है। 5 एक्सेंट्स हैं उसके अंदर। और सिलेबल कितने हैं? 10 हैं। डेका सिलेबिक है, सिलेबल्स 10 हैं। अब फीट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई फीट है उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, जैसे अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। कोई होते हैं जिसमें 3 होते हैं, डबल स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, या डबल अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ फीट यू आर एम्प्लॉइंग। अगर आप सिंपल जो जो जोफ्री चौसर ने यूज किया, वो था इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम्बिक, अयाम का मतलब है एक फीट जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड है और एक स्ट्रेस्ड है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो कवर करता रहूंगा बीच बीच में। इन द मीन टाइम यू ऑल्सो सर्च दीज थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड them because they are the basics. Okay, so तो ये है डेकासिलेबिक। डेकासिलेबिक मतलब 10 सिलेबल है इसके अंदर। For example, I've given you these 2 lines. His eyes twinkled in his heat. All right. His एक syllable है, I, is 2 syllable है, twinkled, twinkled, दो इधर हो गया, दो दो चार एक पांच, एक इसमें 6, in his 7, he'd 8, all right, no, right, I, तो 10 हो गया, 10 syllable। तो दिस इज डेकासिलेबिक लाइन। और ये कौन सी है? अयाम्ब है। इसमें फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है। हिज आईज, हिज आईज, ये अनस्ट्रेस्ड है। आ स्ट्रेस्ड है। ये आगे वाला फिर अनस्ट्रेस्ड है। ट्विंकल, ट्विंकल, ये ये वाला स्ट्रेस्ड है। ये जो ड है, दिस इज अनस्ट्रेस्ड। इन हिज, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है। ये फिर से स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस्ड, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पैटर्न्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट with the practice you can learn it. But if you don't want even to learn it, you should have basic idea of what poetry is, because poetry में सारी चीजें आएंगी। तीसरा जो principal meter which was employed by him was octosyllabic couplet। अब तुमको समझ आ गया, octo मतलब 8, डेका मतलब 10, सिलेबिक मतलब सिलेबल, कितने सिलेबल्स हैं उसके अंदर। तो जो डेका सिलेबिक था उसके अंदर 10 सिलेबल थे, इसके अंदर 8 सिलेबल है। और साथ में क्या है? कपलेट। कपलेट मतलब 2 लाइन का स्टेंजा है। तो इसके अंदर 4 एक्सेंट्स हैं, 4 मीटर्स हैं। मत क्यों? क्योंकि एक एक्सेंट में 2 सिलेबल होता है। तो इस तरह से वहां पे 10 थे तो 5 एक्सेंट्स थे। तो वो अयाम्बिक पेंटामीटर इसलिए उसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम, दिस इज अयाम्बिक, दिस इज नॉट पेंटा, दिस इज 4 लाइन वाला है, राइट। और एंड राइम रहेगा इनमें। सिमिलरली, तो इस तरह से he has used rhyme royal, couplet, heroic couplet and octosyllabic couplet also. Then decasyllabic couplet को हम heroic couplet भी बोलते हैं, राइट। एंड यही चीज जो है बाद में जो आप लेट 18th century में जाओगे, देन ड्राइडन एंड पोप, दे ऑल्सो यूज द सेम heroic couplet with great perfection. So these are the things which he did to English poetry. He has introduced such wonderful verses. Not only this, Chaucer was the first Englishman who realized and brought out the latent music of his language. There are critics who point out that to read Chaucer's verse, observes a critic, is like listening to a clear stream in a meadow full of sunshine rippling over its bed of pebbles. Okay, so this is how the critics they describe the great style with which Geoffrey Chaucer wrote his poetry. So we'll be finishing it here and continue from here onwards. You should try to